आगमन होगा श्री जेपी सिंह महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। अब आगमन हुआ श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आईपीएस माननीय महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। Shri G.P. Singh is an IPS officer of the 1991 batch of Assam Meghalaya Joint Cadre. Hailing from Aligarh in Uttar Pradesh, he completed his schooling and higher education from Lucknow and Delhi. After training at the prestigious Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, he was posted to Assam when it was witnessing a spurt in insurgent activities. He was extremely meticulous in carrying out counter-insurgency operations under the Unified Headquarters Scheme. He has also been a part of the United Nations Development Programme project on improving the organization and management of the law enforcement system in India. Thereafter, he joined the Special Production Group in 2002, heading the close production detail of 2 successive Prime Ministers of India. As Deputy Inspector General and Inspector General of Police at Guwahati, he was extremely instrumental in dismantling the terror network of the banned terrorist groups such as ULFA and NDFB. During his tenure with the National Investigation Agency, he supervised the investigation of some of the most sensitive cases in India, such as ISIS-related terror crimes, Samjhauta Express, Malagon, Ajmer Sharif, and Makkah Masjid blast cases, along with Uri, Pulwama, and Patankot terror attack cases. He has also served as the State Nodal Officer for the interstate movement of the people during the COVID-19 breakout. He also has the distinction of leading the multi-agency anti-rhino poaching task force and ensured zero rhino poaching. He was appointed as the Director General of Police for the state of Assam from 1st February 2023. Thereafter, relinquishing the charge of DGP Assam, he took over the charge of DGC RPF on 31st January 2025. 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి పూర్తి స్థాయి స్వేచ్ఛ లభించలేదు. అది ఇంకా 13 నెలలు నిజాం పరిపాలనలోనే కొనసాగింది. 1948 సెప్టెంబర్ 17న అప్పటి భారత గృహ మంత్రిగా ఉన్న శ్రీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా హైదరాబాద్ రాష్ట్రం భారతదేశంలో విలీనమైంది. హైదరాబాద్ను స్వాతంత్రం కోసం పోరాడి ప్రాణత్యాగం చేసిన అమరుల్ని స్మరించేందుకు మరియు యువతలో దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందించేందుకు భారత ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17న హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవంగా జరిపేలా నిర్ణయించింది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవం సరిగ్గా 76 సంవత్సరాల క్రితం సెప్టెంబర్ 17, 1948న హైదరాబాద్ మహానగరం భారతదేశానికి విడదీయలేని భాగంగా మారింది. मूसी नदी और दक्कन के पठार का यह रमणीक अंचल, यह ऐतिहासिक परेड स्थल साक्षी है हैदराबाद की जनता के उस संघर्ष का, जब सत्ता का हस्तांतरण राजशाही के निष्ठुर हाथों से लौटकर लोकतंत्र के माध्यम से जनता के उन हाथों में हुआ जिन मेहनत के हथेलियों ने
इन पठारी भूमि को अपने रक्त और श्वेत से सींचकर हैदराबाद क्षेत्र को प्रगति पथ के सोपान पर अग्रसर किया और राष्ट्र निर्माण में अतुल्य योगदान दिया। देवियों और सज्जनों, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं 17 सितंबर 1948 को भारत वर्ष के इतिहास के उस अध्याय को याद करने जिसमें दमनकारी शक्तियों के खिलाफ जनता का संघर्ष, एकजुटता और तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ और दूरगामी सोच परिलक्षित है, जिसने सत्ता के निरंकुश और दमनकारी नीतियों को समाप्त कर हैदराबाद का भारतवर्ष में विलय कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण किया, जिसे आज हम जानते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में। मैं भारत सोनी सहायक कमांडर अपने साथी उद्घोषक के साथ आप सभी का हृदय के अंतःकरण से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, शहीद स्मारक स्थल पर पधार चुके हैं। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद स्मारक स्थल पर वीर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। शहीदों को अर्पित पुष्प चक्र यह रीत हमें याद दिलाता है निरंतर गतिमान जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य का, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा का। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़ा पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शहीदों के नाम जो इतिहास के पन्नों में जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे इंसान थे और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश हमारी अस्मिता की, गौरव की, बलिदान की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को सम्मान दिया गया एवं उनकी याद में कुछ क्षणों का मौन धारण किया जाएगा। उनके सर्वोच्च बलिदान को सर्वोपरि मान संवेदनशीलता के साथ शहीदों के द्वारा राष्ट्र प्रथम के प्रण को याद किया जाएगा। यह बड़े ही भावुक क्षण होते हैं जब हम उन हुतात्माओं को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र शहीदों के प्रति पूर्ण रूपेण संवेदनशील है एवं उनके द्वारा दिए गए बलिदान को कभी नहीं भूलता है। The Martyrs Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. The Martyrs Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. The nation collectively bows its head in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but also their families who endure their loss with pride and resilience. हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि हैं श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार, जो कुछ ही क्षणों में शहीद स्मारक स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात इस भव्य परेड स्थल पर उपस्थित होंगे। आइए मैं आपको आज के समारोह की संक्षिप्त रूपरेखा से अवगत करा दूं। सर्वप्रथम हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार का आगमन समारोह स्थल पर होगा, जहां उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद परेड कमांडर के अनुग्रह पर मुख्य अतिथि महोदय परेड दस्तों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पश्चात
परेड के दस्ते सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि